Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study database. For database we will study it in two lectures. This is the first lecture and it will in this we will study these topics. Number one, define a single table database. Number two, choose and supply specific data types. And number three, choose a suitable primary key for the database. Then in the second lecture we will study query by example. I am Inqilab Patel, your computer science teacher. Right. I will teach you database. Database is basically, if we are asked to define the term database, we say that database is an organized and persistent collection of data. It is known as organized because whenever we store data in a database, it automatically arranged in an order. For example, in your mobile phones, you have a contact list. Whenever you enter a telephone number and name, you will observe that it will automatically arranged by alphabetical order by name. Right? So we can say that database is organized collection of data. The second feature of the database, it is persistent. Persistence means it stores data directly on second storage device. Other softwares like your keyboard, other softwares like your MS Word, Excel, PowerPoint, these softwares basically use RAM to store data, but database always store data directly on second storage device. That's the reason whenever we start a database and create a new file, first it asks to uh, select the location of the database and the name of file. Then it starts then the file is created, right? For example, this is a phone book and this is known as a database. Then to maintain a database we use a software. That software is known as database management system, like we are using nowadays MS Access, Oracle. huh? So these are basically database management systems. Our second topic of this is to specify a suitable data type. Here is an example of a database. You may observe that in this example, these are a single piece of data. Any single piece of data is known as field. And the title of the field, these are the title of the field. Basically, these are columns. These title of the fields are known as field name. Acha, if and all fields related to each other are known as a record. For example, here we can observe that we have stored records of 5 students. Rumesa, Sandeep, Cynthia, Philip, and Anne. These are the 5 students. About each student, we have stored 4 pieces of data. For example, Rumesa, the student ID is stored, first name is stored, surname is stored, and date of birth is stored. So we can say that each piece of data is known as a field. So in each record, we can say that there are 5 fields: data, date of birth, surname, forename, and student ID. And here we have stored 5 records. In our syllabus, this is a common question. Sometimes a database table is given and we are asked to identify how many fields are there and how many columns are there.
We will solve the question, then you will see it. Then whenever we store data, store data in the under these headings. These headings are known as like student ID, full name, surname, and date of birth. These headings are known as field name. So these are field names, right? Acha, every field has a unique field name. Uh, This is a rule that two fields cannot be of same name. Uh, Then we need to decide the data type of each field. For example, in paper 2 we have studied whenever we design an algorithm or we write down a program code, we use variables and variables have data type. Here also we have variables, but these variables are different from the variables which are used in programming or pseudocode. Here we have four different types of variables. Like we have a variable that is known as text. In text we store alphanumeric data. Hmm, one minute. For example, here we have a field name, data type, sorry, and description and example data. I am showing you three things: description, example data, and data type. And the data types in algorithm. Now, the first data type is known as text. To store, it is used to store alphanumerical data, alphanumeric data, and symbols. For example, name is equals to Abdullah, address equals to house number 123, right? Or student ID 123. अच्छा bhai. Now, in alphanumeric means text, we can store letters, we can store numbers, but these numbers are not for calculation. And we can store special characters like dollar, buffer, hash. This data type is known as string in algorithm or programming, right? Acha. Here we can store single or multiple characters. Single character like a. It is known as char in programming, but in database it is also known as text. Then we have numbers. To store numbers may be positive or negative and for calculation, right? 123 or 78. It is known as integer. Acha, if we are storing 78.9 in pseudocode, we say that these are real numbers, but in
database, these are also known as number. So we have text and number, then we have date, and we have boolean, right? Then we use a term that is known as primary key. So we have studied that we have four different types of data type. We can divide data type into four categories. We can say that there is text, it may be single or multiple characters. There are number, there are boolean, yes or no, true or false, and there are date. These are different data types which we use. Then we have a concept of primary key. Primary key is basically a field that contains unique data items. For example, here in this database, student ID is primary key. Two students cannot have same name, same ID. It is possible that in a school there are two students, in a class there are two students with the same name or same date of birth or same surname, but it is not possible that two students have same student ID. So a field that contain unique data item is used to uniquely identify the record, uh, and it is known as primary key, right? So for example, here here is a question. It says that a picture gallery owner has decided to set up a database to keep information about the pictures he has for sale. The database picture will contain the following fields: title, artist, description, catalog number, size in or area in square centimeters, price, arrived, date picture arrived and sold, and whether the picture is already sold, to show that whether the picture is already sold or not. Suppose and you are asked to write down their data type. ठीक है बेटा, तो अगर टाइटल होगा तो in this we will write down the title, so it will be text, right? अच्छा भी, for artist again it will be text, for description again it will be text, for catalog number again it will be text. Catalog number is not used in calculation, but here size in square centimeter, so size may be used in calculation to find out the price or something, so it will be number. Price will also be used in calculation, so it will be number. Date, date arrived means its data type will be date. Sold, it is already sold or not, so it will be boolean, right beta? So this was a question of 4 marks. And the second question from this database is choose a suitable primary key. So we will say that the title is the primary key. Two books cannot have same title, so we can say that this is a primary key, right beta? Now there is another question from March 2017. अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है? There is a program that stores the following data: employee ID and employee ID must be two letters followed by four numbers like this. अगर ये बात कर रहा है तो आपको इसकी डेटा टाइप बतानी है, तो इस डेटा टाइप विल बी टेक्स्ट. मैनेजर, वेदर द एम्प्लॉय इज अ मैनेजर और नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा? बुलियन. एनुअल हॉलीडे नंबर ऑफ होल डेज, तो इट विल बी नंबर. पे ग्रेड, द एम्प्लॉइज पे ग्रेड विच मस्ट बी ए लेटर्स ए टू एफ, तो ये भी क्या होगा आपका? टेक्स्ट. सिंगल हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो, टेक्स्ट. द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप आपने बता दी.
Now you are asked to identify the validation text. Validation text, we have studied validation. We have range check, limit check, type check, format check. अब ये कह रहा है कि two letters followed by four numbers. So for employee ID, the data type will be text and we can use length check because the length should be equals to 4 plus 2 6. ठीक है. अच्छा, here you can also use, आपने लिखा लेंथ चेक भी यहाँ हो सकता है, फॉर्मेट चेक भी हो सकता है, बिकॉज इट सेज दैट द डेटा टाइप it is text and yes, you can use length check, you can use format check. The format is that firstly two things are there and then four things, or you may use type check, character check. The characters must be, first two character must be uh, what it says, first two characters must be letters and other characters must be digit. So we can use character check. अच्छा, आपको यूनिक टू राइट डाउन, यूनिक तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करोगे. फिर आपके पास आता है मैनेजर. राइट, मैनेजर. नाउ मैनेजर, मैनेजर के अंदर यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन इट इज मैनेजर और नॉट. तो इसकी डेटा टाइप होगी बुलियन और इसकी डेटा टाइप हो गई बुलियन एंड वी कैन यूज लाइक प्रेजेंस चेक, टाइप चेक. डेटा टाइप को चेक करने के लिए किसके अंदर डेटा आप एंटर करें बुलियन डेटा टाइप है या नहीं है. देन वी हैव एनुअल हॉलीडे. ठीक है. अच्छा, एनुअल हॉलीडे, इट सेज दैट एनुअल हॉलीडे के अंदर होल नंबर स्टोर करने हैं, सो इट विल बी नंबर. राइट, यू कैन अप्लाई अ रेंज चेक कि आपकी जो एनुअल हॉलीडे इस रेंज के अंदर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. फिर आपके पास है पे ग्रेड. पे ग्रेड आप इसको टेक्स्ट लेंगे. नाउ यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, रेंज चेक लगा सकते हो कि पे ग्रेड जो है ए टू एफ के बीच में. अच्छा, यहां पर जब रेंज चेक लगा दिया तो यहां से आपको रेंज चेक को हटाना होगा. तो यू कैन राइट डाउन, हियर यू कैन राइट डाउन लिमिट चेक. क्या है, एनुअल हॉलीडे कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अच्छा, मैनेजर के लिए हमने बुलियन लिया है तो हमने यहाँ पे लगा दिया टाइप चेक, और एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने ये हो गया. अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. सो यू कैन से दैट हियर आर वन वन टू थ्री फोर फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अंदर क्या है, आपके रिकॉर्ड्स हैं एंड 5 फील्ड्स. ठीक है. फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर शो नंबर की डेटा टाइप क्या होगी. तो यू आर स्टोरिंग अल्फाबेट एंड नंबर, तो ये टेक्स्ट होगा. टाइप टेक्स्ट होगा, टाइटल टेक्स्ट होगा. डेट, यहाँ पर आप डेट का फॉर्मेट ये है तो आप ले सकते हैं डेट या टेक्स्ट. सोल्ड के अंदर इसकी डेटा टाइप होगी बुलियन. राइट, और फिर आपसे वही वैलिडेशन पूछ रहा है. तो शो नंबर का फॉर्मेट आप देखें 5 कैरेक्टर का है, तो यू कैन अप्लाई लेंथ चेक. ठीक है. टाइप के अंदर आपको क्या चाहिए, सपोज किया कि आप टाइप है, टाइटल है, डेट है, सोल्ड आउट है. सपोज किया यू आर आस्क्ड टू एंटर टाइप मस्ट, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंस चेक लगा दिया. टाइटल के अंदर आपने क्या कर दिया, कैरेक्टर चेक लगा दिया. डेट के अंदर आपने टाइप चेक लगा दिया कि इसके अंदर जो है वो डेट का टाइप का डेटा स्टोर हो. हाँ, सोल्ड आउट के अंदर आपने क्या कर दिया, एग्जिस्टेंस लगा दिया, एग्जिस्टेंस चेक या टाइप चेक. तो इस तरह आप कोई भी चेक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं.
बट ऑल चेक्स मस्ट बी यूनिक इन ईच फील्ड। अब देखें ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स इन द टेबल। तो 1 2 3 4 5 फील्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इसी तरह से दिया है और आपसे ये, अच्छा, स्टेट वेदर एनी ऑफ द फील्ड शोन वुड बी सुटेबल एज अ प्राइमरी की। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास प्राइमरी की क्या है, देखिए एप्पल एप्पल दो दफा है, ये प्राइमरी की नहीं हो सकता। ये 10.95 टू टाइम आया, ये प्राइमरी नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप क्या कहोगे, स्टेटर वेदर एनी फील्ड शोन वुड बी सुटेबल एज अ प्राइमरी की, तो आप लिखोगे नो। एक्सप्लेन बिकॉज ऑल फील्ड्स कंटेन डुप्लीकेट डेटा आइटम्स, या नन ऑफ द फील्ड कंटेन यूनिक डेटा आइटम। ठीक है, गिव अ रीजन फॉर चूजिंग बेवरेज नंबर एज अ प्राइमरी की। तो बेवरेज नंबर को प्राइमरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेवरेज नंबर सबके लिए यूनिक है। स्टेट द हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सेट कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डेटा टाइप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, और आपको वैलिडेशन रूल्स चेक करने हैं कि किस फील्ड के ऊपर कौन सा वैलिडेशन रूल अप्लाई हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।